The quantitative measure of degree of hotness or coldness of a body is known as temperature. The measurement of temperature of a body is a relative measure. It is basically measured with the help of an instrument known as thermometer. For example, probe thermometers, analog thermometers, infrared thermometers and clinical thermometers like mercury field thermometer and alcohol field thermometer. mercury field thermometer हम फीवर चेक करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है. These thermometers comprises of two major parts, namely a temperature sensor. यहाँ पे देखो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में दिखाया गया ना मरकरी फील्ड थर्मोमीटर, क्योंकि ये फीवर चेक करने के लिए यूज किया जाता है. तो दो मेजर पार्ट हैं इस थर्मोमीटर के, वो हैं ए टेम्परेचर सेंसर इन विच चेंजेज अकर विद द चेंज इन टेम्परेचर लाइक बल्ब ऑफ मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर एक्सेट्रा, ठीक है. सम मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग चेंज इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक स्केल मार्क्ड ऑन ग्लास thermometer etc. However, the most commonly used and accurate temperature sensor are negative temperature coefficient thermistor, thermally sensitive resistant that exhibit large predictable and precious change in resistance with the change in temperature. Resistance temperature detectors and thermocouple, two different metallic wires connected at 2 points and varying voltage between 2 points, reflects proportionality change in temperature. Following table shows temperature range and accuracy of these sensors. टेम्परेचर रेंज थर्मिस्टर में है -100 to 325 डिग्री सेल्सियस, RTD में है -200 to 650 डिग्री सेल्सियस एंड थर्मोकपल में है 200 to 1750 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे एक्यूरेसी है इसकी 0.05 to 1.5 डिग्री सेल्सियस. RTD में एक्यूरेसी है इसकी 0.1 to 1 डिग्री सेल्सियस और थर्मोकपल में 0.5 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. इट इज डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स, नेमली इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, एल्टीट्यूड एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा. इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर वेरीज ग्रेटली विद द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ के सरफेस से हाइट डिफरेंस जैसे जैसे होगा वैसे टेम्परेचर डिफरेंस भी होता रहता है. The major factors responsible for such a varying range of temperature is the heating effect of solar radiation. सूरज की रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसकी वजह से ही ये रेंज में चेंज होता है, ठीक है. द रेट एट विच अर्थ और एनी अदर प्लानट अब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लानट. सन और प्लानट के बीच का डिस्टेंस है, उसकी वजह से भी हमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में चेंजमेंट देखने को मिलते हैं. दिस इज बिकॉज द फ्लक्स ऑफ solar radiation's amount of energy flowing across per unit area in unit time varies inversely as the square of this distance. Also, there would be a fraction of incident energy that would be reflected back to space or cloud. cloud के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से है ना जो सोलर की एनर्जी है ना वो रिफ्लेक्ट भी कर जाती है, वापस भी चली जाती है, उससे भी टेम्परेचर कम हो जाता है. तो टेम्परेचर वेरी करता है जगह से जगह पर, ठीक है. विच इज नॉन एज एल्बेडो ऑफ दैट प्लानट. उस प्लानट का एल्बेडो कहलाया जाता है जब क्लाउड से वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है. Thus, the amount of solar energy absorbed is represented by the expression which is energy absorbed is equal to pi into radius square into solar flux into 1 minus albedo, ठीक है. However, according to Stephan-Boltzmann's law, amount of heat energy radiated by a surface of unit area each unit time is proportional to the fourth power of temperature. So, flux is equal to so we can write from equation 1 and 2, and this one is the temperature is equal to solar flux into 1 minus albedo का अंडरूट और बाहर के साइड है ये 4/4 into this. okay, this calculated temperature is known as effective temperature. This calculated temperature is known as effective temperature. Also, there is a concept of global temperature which is most commonly used in climatology. It denotes the average temperature of the earth based on its surface, near surface and tropospheric measurements. These temperatures are measured and recorded by satellites
or ground instrumental temperature measurements. Then they are usually compiled by using a database or computer model. Okay. Next is temperature inversion. Atmospheric temperature generally decreases with the increase in altitude in troposphere or vice versa, as shown in the figure given below. Here this one is altitude, this one is temperature, normal temperature profile of atmosphere. Okay, तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है, अल्टीट्यूड बढ़ रहा है, अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता है. ये देखो, ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर ये है. जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होता गया टेम्परेचर बढ़ता गया. तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा. हाउएवर देयर एग्जिस्ट ए रीजन इन ट्रोपोस्फेयर वेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड. कई जगह है जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर के बढ़ने पर, एल्टीट्यूड के बढ़ने पर इंक्रीज होता है क्या, टेम्परेचर. ठीक है, विच इज नोन एज थर्मल इन्वर्जन. उसको थर्मल इन्वर्जन बोलते हैं, जैसे अभी दिखाया गया है. इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, एल्टीट्यूड देखो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा था. ठीक है, मगर ये बीच में देखो यहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ा भी है. तो ये एरिया है टेम्परेचर इन्वर्जन का. ठीक है, बेसिक में हो गए ऐसा. ठीक है, नाउ रोल ऑफ थर्मल इन्वर्जन इन एन एटमोसफेयर. ठीक है, थर्मल इन्वर्जन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, precipitation as well as in producing other important factors that are visible in atmosphere. It is also responsible for the air pollution disaster. Temperature inversion is basically caused when the air moves to lower altitude and higher pressure results in compression in air. Thus the temperature is increased with the increase in altitude. Here the precipitation. In meteorology, any product of the Earth's atmosphere that condenses while falling freely under the gravity is called as precipitation. Like drizzle, rain, sleet, snow, hail, etc. ये सब precipitation के part हैं. ठीक है, it occurs when the atmosphere becomes saturated with the water vapors. Water vapors से जब है ना saturated हो जाता है ना nature, तब बनता है ये. ठीक है, वाटर वेपर से. ड्यू टू दिस द वेपर्स कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट्स. इससे है ना जो वाटर है वो कंडेंस हो जाता है और प्रेसिपिटेट मतलब बारिश या फिर कह सकते हैं बर्फ गिरती है. ठीक है, कूलिंग ऑफ एयर और एडिंग वेपर टू द एयर आर पॉसिबली टू प्रोसेस एक्टिंग टुगेदर दैट कैन लीड टू सैचुरेशन. अगर ठंड बढ़ती है, ठीक है, उसकी वजह से भी एयर है वो कंडेंस हो जाते हैं. ठीक है, और वो सैचुरेट होके साथ में आ जाते हैं और हैवी होने की वजह से वो अर्थ पर बारिश या फिर बर्फ कर देते हैं. ठीक है, नाउ मेजरमेंट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वाटर. Measurements of precipitation. Precipitation is measured as the amount of water that reaches horizontal ground or the horizontal ground projection plane of Earth's surface. It is then expressed as the vertical depth of water or water equivalent of solid precipitation. The instruments used to measure precipitations are rain gauge, snow gauge, etc. So here we are gonna explain rain gauge. Okay, I will try to explain in English. Rain gauge. It measures the depth and intensity of the rainfall in a certain period of time. It is majorly of two types. Rain gauge is an instrument used to measure the depth and intensity of the rainfall. Okay, in a particular certain period of time. Okay, now non-recording rain gauge. These are used by most hydrological and meteorological services for official measurement. This one is used for official measurement. It consists of a
open receptacles with vertical sides, usually in the form of right cylinders. The depth of the precipitation caught in a gauge is measured by means of a graduated flask or dipsticks. In gauges other than vertical sides, the measurement is made either by weighting or measuring the volume of the content. Two types of most commonly used non-recording rain gauge are Simmons and standard rain gauge. Now the other one is recording rain gauge. Okay. This produces a continuous plot of rainfall against time and provides valuable data of intensity and duration of rainfall for hydrological analysis. Rainfall against time and provides valuable data of intensity and duration of rainfall for hydrological analysis. There are 5 types of precipitations recorded are wetting type, okay, fluid type, tipping bucket type, and distrometer, and the acoustic type. Okay. Although surface precipitation gauges are considered as the standard for measuring precipitation, okay, but there are many areas in which their use is not feasible. This includes vast expanses of ocean, remote land areas, etc. Thus, precipitation could be largely recorded with the help of satellite observation. Okay. Satellite sensors works by remotely sensing precipitation. In this recording of the various parts of the electromagnetic spectrum helps to show the occurrence and intensity of precipitation. Helps to show the occurrence and intensity of precipitations. These sensors in practical use for precipitations falls in 2 categories, which is thermal infrared sensor and microwave sensors. Okay. Next is humidity. The amount of water vapor's gaseous state of matter present in the atmosphere is known as humidity. What is humidity? The amount of water vapor, which is gaseous state of matter, present in the atmosphere is known as humidity. It indicates the likelihood for precipitations, dew or fog to be present. Humidity is classified into following 3 types: specific humidity, absolute humidity, relative humidity. The first one is, it is defined as the specific humidity. It is defined as the ratio by the mass of water vapors to the total mass of the moist air package. Okay. Absolute humidity. It is the amount of water vapor in a given volume of air at particular temperature. It varies with air temperature and pressure. Relative humidity. It is a ratio of vapor present, P, particularly pressure of water vapor in the air, to the standard vapor pressure, Ps, at a given temperature. Here R having constant, H is equal to P upon Ps into 100.
Okay, here orientation is locked. It can be calculated is equal to RH is equal to amount of water vapor in a volume of air at temperature upon maximum amount of water vapor that the same volume of air can hold at T into 100. Okay, it is normally expressed as percentage. A highly percent means air water mixture is more humid. A higher percent means air water mixture is more humid. It is an important matrix used in weather forecast. Okay.